Hi you guys, what's up? Welcome back to my channel. In this video I'm going to be sharing you how to create this makeup look. This is a very work friendly makeup tutorial. So if you are a kind of girl or woman, if you go to office or attend college or yeah, you just go to work and work for long hours, so but you like to do makeup, so this tutorial is just for you. So in this video I'm gonna be sharing, this is very very minimalistic, very light, very taupey brown toned makeup look which is suitable for work also. मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करे हैं इस मेकअप ट्यूटोरियल में वो बिल्कुल ही लॉन्ग लास्टिंग है, वर्क फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लुक बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होने वाला है। एंड एक चीज़ और बैकग्राउंड अपडेट ये है कि अभी फ़िलहाल आई हैव पुट सम फ्लावर्स, सो आई थिंक ये थोड़ा डिसेंट लग रहा है प्रीवियस बैकग्राउंड से, तो बेटर ही है, दैट्स व्हाट आई थिंक, क्योंकि आपको प्रीवियस बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगा था, सो आई हैव चेंज। एंड वैसे भी जब तक कोई परमानेंट बैकग्राउंड मेरा नहीं हो पा रहा है मैं इसी तरह चेंज करती रहूँगी, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और बातें करने से बेटर है, लेट्स जस्ट मूव इनटू द ट्यूटोरियल। Okay, so for primer I'm going to be using the Mally Infallible primer. This is a very lightweight primer and also it mattifies the skin, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे प्राइमर एक मैट फिनिश का ही चाहिए। इससे ये भी फ़ायदा है कि बहुत टाइम तक फाउंडेशन स्टे करेगा हमारे फेस पे, क्योंकि ये मैटिफाइंग है, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोना बी यूजिंग। Okay, so I'm gonna be starting up with the Inside Cosmetic. This is the long wear foundation, and this is liquid based foundation, and it's very light, so it is suitable for this look, and also it's very long lasting and it's quite full coverage. That's what the bottle says. So I'm gonna be using this. I use this a lot, even मैं बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका शेड भी बहुत सही है मेरी स्किन के लिए। ओके, सो एज यू कैन सी मेरे फेस से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है इसका शेड, एंड बहुत ज़्यादा नेचुरल भी लग रहा है। सो आई एम जस्ट गोना बी मूविंग फॉरवर्ड। मैं कंसीलर अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि कंसीलर की उतनी नीड मुझे लग नहीं रही है, एंड क्योंकि इस मेकअप को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाना है, तो आई विल नॉट लेयर अप द प्रोडक्ट, मैं लेयर पे लेयर नहीं उसको बढ़ाऊँगी। बट टू स्टील माई फाउंडेशन आई विल यूज़ अ लूज़ पाउडर इंस्टेड ऑफ अ कॉम्पैक्ट, क्योंकि लूज़ पाउडर से मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाता है, एंड फिर ये कहीं भी हिलता नहीं है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट या it sets very perfectly when you use a loose powder, so I'm using that. Eyebrows, I'm going to be taking up the Miss Claire eyebrow pencil. This is the shade dark brown, and it is waterproof, so thumbs up for this look, because we want product like that. Okay, so I'm just lightly filling up my eyebrows with this. For my eyeshadow I'm going to be using the Maybelline 24 Carat Nudes palette. So it has a lot of brown tone shades, so just like this, it has quite a few neutral shades, so I think it's perfect. So I'm going to be using this brown shade for my crease, and this shade at my transition. After that I will pop on add some shimmer to the lids, and probably that's very simple eye makeup. So yeah, let's just do.
Okay, so I want to do a little voiceover here. I'm just taking the lighter shade and apply it on my crease as my transition, and I'm just patting some brown color. Basically, brown color को अपनी crease पे लगा रही हूँ, like blend कर रही हूँ अच्छे से. इससे आई मेकअप थोड़ा सा easy हो जाएगा, बहुत easy हो जाएगी. एंड सेम ब्राउन कलर मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी ताकि वो सिमिलर सा एक समान जैसा लगे. उसके बाद मैं शिमरी शेड लेकर मैं लिड प्लेट पे लगा लूँगी एंड दैट्स इट. सिर्फ इतना ही, बहुत सिंपल आई मेकअप करूँगी. ब्रश से लेके सब कुछ आपस से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कुछ भी अलग सा ना लगे. एंड या दैट्स कंप्लीट माय आई मेकअप. एंड या लोअर लैश लाइन पे आई विल इंटेंसिफाई द कलर and that's it, very simple. And I will do my other eye as well, and yeah, that's complete look. For kajal, I'm going to be taking the K Beauty kajal. This is the shade Onyx, that's what I think. And I'm going to be applying this on the waterline क्योंकि ये काजल बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है and we need product like that. I'm going to be taking the Nykaa Get Wing liner, and I will create a normal basic line, not any wing, because I think वो बहुत ज़्यादा OTT हो जाएगा. That's why. So for mascara, I'm going to be taking my same old Maybelline Hyper Curl mascara. It is beautiful and waterproof, so that's why it gives my lashes a very nice curled effect. So this is really nice. Maybelline mascaras are really nice. I want to try it all. Okay, so my face, my blush, contour and highlight, I'm going to be using only one palette. This is from Sivana Colors and it has every shade that you should need for your face. It has a bronzer, a contour shade, a highlighter shade and six beautiful blush on shades. So I'm going to be using the same palette and it is so natural and so beautiful and it's quite long lasting, so I don't have any complaints. Yeah, so I will use this contour, this highlight, but for my blush I'm gonna be taking, I think, this coral shade. So it is very light and very brown toned coral, I don't know. So yeah, I'm gonna be taking these three things over here. So yep. Okay, so for my lips, I'm going to be taking the Nykaa Matte to Last liquid lipstick in the shade Madras Kapi. This is specially, for girls who, who work, because it is a very beautiful nude brown kind of a shade. So if you're looking for a brown which is slightly on the lightest side, which is slightly nude in color, so this is a beautiful, because it's, let me give you a swatch. So it looked like this and it's beautiful. Yeah, it's not completely brown, but it is nude brown, so it is very good. So this shade is perfect for for work, for office, so that's why I'm using.
Okay guys, thank you so much for watching this video. If you like this video, please give this video a big huge thumbs up if you like it, and subscribe to my channel so you don't miss any other makeup tutorials like this. And if you want any other tutorial, please comment down below. I will definitely share. And do follow me on my Instagram. My Instagram handle I will somewhere over, I will just write. And yep, I shall see you in my next video. Till then, bye bye, take care. Also don't forget to share this video. Okay, bye bye, take care, because that's been important.